Hello friends, I am Devin, a student forever will learn biology with you. So today's topic is cell, the unit of life cell. What is cell? Yes, friends, before understanding cell, let us first be introduced with living and non-living things. So living things are those that shows life, like animal, plant, algae, bacteria, fungi, etc. And non-living things like rock, chair, glass, pen, etc. Our question arises here, what is that makes things living and non-living? Answer to this question is cell, the basic unit of life. And life involves the ability of an organism to grow, to reproduce, to move from one place to another, to breathe, to excrete, and to obtain energy from food to do all these activities. And to accomplish all these activities of life, a basic functional and morphological unit is required, and that unit is termed as cell. So cell is the basic structural and functional unit of life. Morphologically, all living cells are composed of its functionally active organelles which makes them live. तो फ्रेंड्स, सेल को और आगे समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि लिविंग चीज़ें क्या हैं और वो लिविंग या जीवित क्यों कहलाती हैं। तो इसका उत्तर यह है कि जीवित वस्तुएं लाइफ के लक्षणों को दर्शाती हैं, जो कि नॉन लिविंग चीज़ें या फिर निर्जीव वस्तुएं नहीं दर्शाती। इधर एक सवाल पैदा होता है कि ऐसी वो क्या चीज है जो कि चीजों को जीवित या अजीवित बनाती है। तो वह चीज है लिविंग सेल या जीवित कोशिका, जो कि लाइफ के लिए सबसे बेसिक यूनिट है। All organisms are composed of cells. Some are composed of a single cell and are called unicellular organism, while others like us are composed of many cells called multicellular। और सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनते हैं, कुछ सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं, उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। कुछ एक से बहुत ज़्यादा सेल से बनते हैं, उन्हें हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जीवन के वो सभी कार्य करते हैं जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी करते हैं। कोई भी चीज़ जो कि एक सेल के कंप्लीट स्ट्रक्चर से कम है, वो अकेले जीवन को नहीं व्यतीत कर सकती जो कि एक संपूर्ण सेल कर सकती है। इसलिए सेल को यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। हु डिस्कवर्ड द सेल? सेल की खोज किसने की? डच साइंटिस्ट एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड ए लाइव सेल। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. The invention of microscope and its improvement leading to electron microscope revealed all the structural detail of the cell. डच साइंटिस्ट एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित सेल यानी प्रोटोजोआ बैक्टीरिया को अपने माइक्रोस्कोप में देखा। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। माइक्रोस्कोप का आविष्कार और उसके लगातार सुधार और उसके बाद माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी ने सेल के सारे स्ट्रक्चर को डिटेल्स में बताया। Now comes the cell theory. Cell theory was proposed by German botanist Matthias Selden and English zoologist Theodor Swan in year 1839. The theory states that cells are building blocks of living organisms, and all living organisms are composed of cells and product of cells. Rudolf Virchow, 1885, first explained that cell divided and new cells are formed from pre-existing cells. He modified the hypothesis of Selden and Swan to give the cell theory a final say. Cell theory, as understood today, is all living organisms are composed of cells and their product. Second, all cells arise from pre-existing cells. German botanist Matthias Selden और इंग्लिश जूलॉजिस्ट स्वान ने 1839 में सेल थ्योरी को प्रपोज किया, जिसमें बताया कि सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं
और सभी जिंदा ऑर्गेनिज्म सेल और उनके प्रोडक्ट्स से मिलकर बनते हैं। रेडोल्फ बर्चो ने 1885 में पहली बार समझाया कि सेल डिवाइड होती है और दूसरी सेल का जन्म देती है। सेल्डन और स्वान की थ्योरी को मॉडिफाई किया और सेल थ्योरी को एक फाइनल रूप दिया। वो कहती है कि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और उसके प्रोडक्ट से बनते हैं। Overview of cell. Friends, you must have seen the stained slide of onion peel and cheek mucosa under the microscope. Onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary, and just within it is the cell membrane. The cell of human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell. Inside each cell is a dense membrane-bound structure called nucleus. Nucleus contains chromosome, which in turn contains the genetic material DNA. So here is the structure of chromosome. Cells that have membrane-bound nucleus are called eukaryotic cell. Nucleus having nuclear membrane. Whereas cells that lacks a membrane-bound nucleus are called prokaryotes. In both prokaryotic and eukaryotic cell, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of cell. Cytoplasm is the main arena of cellular activities in both plant and animal cells. Various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state. फ्रेंड, दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं या सेल्स में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इस साइटोप्लाज्म में रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो सेल के जीवन को जीवित रखने में कार्य करती हैं, सेल को जीवित अवस्था में रखने में सहयोग दें। Beside the nucleus, eukaryotic cells have a membrane-bound distinct structure called organelles, like the endoplasmic reticulum, the Golgi complex, lysosomes, mitochondria, and vacuoles. You can see here endoplasmic reticulum, Golgi body, ribosomes, mitochondria. दोनों ही प्रकार के सेल्स में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और साइटोप्लाज्म वो मेन जगह है जहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल को जीवित स्टेट में रखने के लिए। बिसाइड द न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, like endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies, and vacuoles. The prokaryotic cell lack such membrane-bound organelles. Prokaryotic cell में ये सब अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, खाली राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि दोनों प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन ऑल द सेल्स, बोथ यूकैरियोट्स एज वेल एज प्रोकैरियोट्स। Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles. सेल के अंदर राइबोसोम्स खाली साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाए जाते, जब बल्कि दो ऑर्गेनेलीज के बीच में भी पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट्स इन प्लांट सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन both the structure ribosomes are found. Animal cell also contain another membrane bound
organelles called centrosome, which help in cell division. एनिमल सेल्स में दूसरा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं, जो कि सेल डिवीजन में सहायता करता है. सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज. Mycoplasma, the smallest cell, 0.3 micrometer in length, while bacterial cell would be 3 to 5 micrometer. Largest isolated single cell is the egg of an ostrich. Among multicellular organisms, human RBC are about 7 micrometer in diameter. Nerve cells are some of the largest cells. Cells differ greatly in size, shape and activities. सेल उनके साइज, शेप और एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलते हैं. जैसे कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल है जिसकी लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर है. बैक्टीरियल सेल 3 से 5 माइक्रोमीटर के हो सकते हैं, जबकि ऑस्ट्रिच का एग एक सबसे बड़ी सेल है. और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस में आरबीसी का डायमीटर 7.0 माइक्रोमीटर है. नर्व सेल आर सम ऑफ द लार्जेस्ट सेल. नर्व सेल में काफ़ी बड़ी बड़ी सेल पाई जाती है. सेल आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप. दे मे बी डिस्क शेप, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबोइड, थ्रेड लाइक एंड इवन इरेगुलर. सेल्स आकार में कई प्रकार की हो सकती हैं. डिस्क शेप हो सकती हैं, पॉलीगोनल हो सकती हैं, कॉलमनार हो सकती हैं, क्यूबोइड लाइक हो सकती हैं, राउंड हो सकती हैं, फ्यूजिफॉर्म हो सकती हैं, स्टार शेप्ड हो सकती हैं. So friends, thanks for watching this video. In my next video, we will learn the cell in some more detail. We will learn about organelles of cell. So thanks for watching.